सबुठु बड़ सभ्यता हला हरप्पा सभ्यता। दे स्टार्टेड द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। ज्ञान बिना से माने एक सहर योजना से माने तैयारी करि पारतिले। दे मेकिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम व्हाइल फिक्सिंग विथ द ब्रिक्स। Hello, welcome to Art Square classes and my dear students and my respected viewers. You are all familiar with me and myself is Lalitandu Das, Professor of History, and you might have viewed my previous video which was started on Harappan culture or civilization. And we have already started this civilization and who were the real inhabitant, by whom the great civilization was started. We have already narrated that chapter. And we know that this civilization is the first civilization of India, and I have already discussed that was the first set off in our Indian culture, and eminent historians view that the Indian culture has been originated from this Harappan culture. So we are going to start this culture, and the remaining part of this culture will be discussed today. And I left there at the Dravidians, who were the real originator or inhabitant of this civilization. And they have started this civilization in such a way, we can tell this is not less than a town plan. Their culture is fully urbanized. This civilization was completely a town planning structure, and the real inhabitant were the Dravidians, and they had constructed the multi-storied building we have already discussed. And today we will start with the roads, drains of this culture. And you know very well, they were skilled and artistic in their design. They knew how to construct a good town planning system in their Harappan captivity. So without any knowledge, without any experience, they had started a good civilization. And this civilization was the most notorious, and we cannot believe a person, those who are acquainted with this culture, how they developed this civilization. And particularly, they were using the bronze bricks as it is today, and they making interlocking system while fixing with the bricks. The bronze bricks were used in their buildings, and they started the multi-storied buildings, and all the houses were set up in such a design. The roads were passing in the middle of the two houses. Both the roads were structure of houses, and these roads are connected with the main road in right angle system, and they were very much acquainted with the environmental system. And all the roads are connected with the main roads, and they were connecting with each other in right angle directions. And they were very much acquainted with the environment. That is why they planted the trees on the both sides of the road. And the most important thing during their structure was that they also built the connecting drainage system. They were completely aware of environmental system. Now we are like this. I have already told you
modern civilization is completely originated or derived from this Harappan culture. As we are doing the drainage system in the both side of the road, they were doing the drainage system on the both side of the road. And you know, I told you that both side of the road there were the houses, and each houses are connected with a drain, and these drains were connected with the main drains. So there was a complete drainage system in Harappan culture. Drainage, roads, tree plantation, multi-storied building, both sides of the road, these are the things which are associated with a town or a urban culture. आमे जानिले पिला माने the urban culture हरप्पा संस्कृति रे आरंभ होइतिला एवं लोक माने संपूर्ण भाव रे सेमानकर कोनोसी नॉलेज नथिला, ज्ञान नथिला ना सेमानकर कोन करिवा, कोन केमिति करिवा, तार फलाफल कोन हबो से जिंस से मन जान नथिले. ऑल ऑफ ए सडन ताको मुंडू को जा आसिला, जहा ताकर बुद्धि आ विवेक कहिला, से माने से प्रकार सभ्यता से तैयारी करथिले. सबुठु बड़ सभ्यता हला हरप्पा सभ्यता, जोथिरे विदाउट द नॉलेज, ज्ञान बिना से माने एक सहर योजना से माने तैयारी करि पारतिले. सहर योजना रे से मानकर सभ्यता सृष्टि करथिले एवं सेही सभ्यता भारतर प्रथम सभ्यता बोली ऐतिहासिक माने कहउतिले एवं आज भी कहउचंती, आगामी भविष्यत रे मध्ये से माने कहिबे एइटा ही सत्य. एवं तांको उपरे सेमानकर अगाध विश्वास थिला, सेमानक उपरे सेमानकर अगाध विश्वास थिला. से माने जहा करिवे से माने ठीक करिवे एवं जोटा कि हुए तो एक अदृश्य शक्ति से मानक पछरे थिला एवं तांकर समस्त कार्य सफल होतिला. दी तल प्रसाद से माने तैयारी करुथिले एवं जेमती गोटे शहरी योजना जेमती हुए रास्ता भी से माने तैयारी करथिले. रास्तार उभय पार्श्व रे से माने घर भी तैयारी करथिले एवं प्रत्येक रास्ता गुड़िक मुख्य रास्ता रे छेद करुथिला एवं एपरी अवस्था रे छेद करुथिला सेटा 90 डिग्री कोण रे छेद करुथिला एवं रास्ता गुड़िक संपूर्ण ओसारिया थिला एवं रास्तार उभय पार्श्व रे वृक्षरोपण करथिले, कारण से माने परिवेश उपरे सचेतन थिले. आज आम गछरोपण करुचे, वृक्षरोपण करुचे, किंतु सेतबेले सेमानकर मुंडरे बुद्धि थिला जे गछ बा वृक्षरोपण करने द्वारा परिवेश एवं मनुष्य जगत रे गोटे संतुलन सृष्टि हुए. ये जिनस से माने भी जानी थिले. आज आम बहुत दिन पर जानिले, पढ़ी की जानिले, बट विदाउट एनी नॉलेज they knew it and how developed and how far they were skilled we can expect it. से जा हो से माने रास्ता गुड़ी कति ओसारिया करथिले एवं उभय पार्श्व रे नला सृष्टि करथिले केवल पानी जीवा पाई, वर्षा पानी एवं तांको घरर अपरिष्कार पानी किपरि रास्ता ऊपर को न आसीबो सेतिपाई से माने कोन करथिले घरु गोटे ड्रेन तैयारी करी कि मेन ड्रेन ने मिस्टिला. तेणु परिवेश उपरे से माने सचेतन थिले, ता सहित से माने एक सुस्थ निरामय जीवन यापन से माने सृष्टि करथिले. तेणु आमे जेतबेले सिविलाइजेशन चैप्टर आमे पढिले सेतबेले आमे प्रथम वीडियो तुमे देखिथिबो मनीष पई तार बेसिक बा तार मौलिक आवश्यकता आमे जानिले. खाद्य, बासगृह एवं पोशाक. आमे बासगृह कथा डिस्कशन कले एवं से माने किपरि बासगृह करथिले, किपरि परिवेश को संतुलन करिके हाउ दे स्टार्टेड देयर अन हेल्दी लाइफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ वी विल कम टू द सिस्टम हाउ दे वर टेकिंग देयर फूड हैबिट. से माने किपरि खाद्य खाउतिले.
सबुठ बड़ कथा है दैट वाज ए ग्रेट सिविलाइजेशन एटा गोटे बड़ सभ्यता एवं ये बड़ सभ्यता क्या द्वारा है ये बड़ बड़ लोक मान द्वारा है कहीं बड़ बोली कहुते बिकॉज दे आर वेरी स्किल्ड डेवलप्ड एंड दे हैड एनफ नॉलेज ये गुण जो आम कहे गोटे बड़ सभ्यता बड़ लोक मान द्वारा है द वर्दी सिविलाइजेशन ऑफ वर्दी पीपल मूल्यवान सभ्यता मूल्यवान लोकों द्वारा सृष्टि है तेणु ये जो मूल्यवान लोक कहुच्छे कहीं बिकॉज दे आर वेरी लेबोरियस से माने अत्यंत परिश्रमी परिश्रम द्वारा दे हैड स्टार्टेड द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड तेणु से माने जो सभ्यता सृष्टि करथिले ताकर सुदृढ़ सुदक्षता परिश्रम द्वारा ही सृष्टि होता तेणु दे आर वेरी हार्ड वर्किंग से संपूर्ण परिश्रमी थिले एवं तांको परिश्रम से कि कार्य करुतिले बाय व्हिच दे हैड कंस्ट्रक्टेड द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग व्हाट अबाउट देयर नॉलेज हाउ देयर लाइफ वाज गोइंग टू स्पेंड तांको जीवन केमती अतिबाहित करथिले कोन खाउतिले तेणु आम जानिचे भल भाव एंड हेल्दी फूड मेक्स मैन हेल्दी सुस्थ खाद्य मनुष्य को सुस्थ कराए तेणु से जो सुस्थ खाद्य से माने खाउतिले दीज वेयर देयर ओन प्रोडक्ट से मानकर निजर प्रोडक्ट थिला से माने ताकर जदि सेटलमेंट होता है से माने गोटे जगार जदि बसवास करते ड्यू टू एग्रीकल्चरल पैटर्न व्हेन दे गॉट द स्पिरिट ऑफ एग्रीकल्चर जेतवाले से माने एग्रीकल्चर बा कृषि जानिबा को पाइले कृषिटा कौन हाउ द एग्रीकल्चर विल बी प्रैक्टिस्ड they started settling in one place particularly they started settling at the side of river Indus because they knew very well to conduct the agriculture three things required water soil and sunlight sunlight and soil is available and where there is water when they found out the river of Indus they started settling at the side of river Indus तेणु सिंधु नदी कूल से एग्रीकल्चर आरंभ कले एवं एग्रीकल्चर जेतबले से कृषि आरंभ कले माटी को खोलिबे एवं जेतबले भू खनन करागला मु तुमको आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर तुमको कही भू खनन रे ऐतिहासिक मानक जहाँ मिली ताकू आधार करिकी से माने इतिहास लिखिथिले एवं बहु जगार भू खनन करा जाई कि एग्रीकल्चर बा कृषि उपकरण जिनस मिली फाड़ मिली लंगल मिली तेणु आम एथुरु जानुचे दे वेयर स्किल्ड इन एग्रीकल्चर एवं बलद मानक द्वारा से माने हल करुथिले एवं ता सहित बहुत जगार कहुई दे एनगेज द बुल्स वृष मानक माने से माने हल जोचुले एज पर द हिस्टोरिकल डाटा ऐतिहासिक तथ्य अनुजाई से माने दे वेर प्रोड्यूसिंग व्हीट बार्ली राइस एंड मेनी मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऐतिहासिक मानक मत अनुजाई धान गहम बाजरा पनीपरिबा चाष करुतिले एवं से माने उभय भेज एवं नॉन भेज मध्य खाउतिले आमिष खाउतिले एवं निरामिष मध्य से माने थिले एंड देयर फूड प्रैक्टिस वाज गुड एंड दे टेकिंग देयर everyday meal in a perfect way so that they are going to be strong से माने स्ट्रॉन्ग होतिले एवं सबुठु बड़ कथा आला से माने रंधा खाद्य खाउतिले एवं भू खनन बेले देखा जाइछे अनेक स्थानरु चुलीर उद्भावन होइछे चुली को
आविष्कार करा जाइए। एवं आमे देखिबा कालीबंधन को जदि देखिबा पाखापाखि 700 चूली आविष्कार करा जाइए। मोहेंजोदारो रे गोटे जगार 7टा चूली तैयारी करा जाइए। एथुर कौन जना पड़ुछि गोटे जगार 7टा चूली कहीं करा जाइए? बिकॉज दे आर very united to each other. In case of any occasion, they were jointly cooking their food and taking their meal, and they had also a good unity among themselves. And these are the essence of a town culture. एवं ए टाउन कल्चर बा ए शहरी जीवन रे से माने बहुत किसी आगो को जाइतिले, जा फल आमे रोड ड्रेन आउ चूली विषय आमे पढ़िले। एवं एग्रीकल्चर आमे देखिले जे हाउ द पीपल प्रोड्यूस देयर कॉर्न्स। एवं से माने केवल जे सेमानको पाई चाष करुतिले ता नुहे, देयर प्रोडक्शन वाज लार्ज, heavy production was going on in the Indus Valley. So how they will store their production for their emergency? हे उत्पादक गुडी को से माने किपरि सुचारू रूपे संरक्षण करुतिले सेटा हमें एटी पढ़िबा, जोटा हमें कहबा शस्य भंडार, आमे कहबा गार्नारी। ए गार्नारीटा समस्त उद्देश्य रे थिला। All the peasants of Indus Valley civilization, they could use this garnery. So it was called a public garnery. आको एक सर्वसाधारण भंडार बोली कुआ जाउतिला, शस्य भंडार। एटा बाहरची हरप्पा, हरप्पा एटा बाहरची जोटी आमे देखिले ए गार्नरी। ए जो गार्नरी एटी रहिला तार माप होचे 50 फुट दैर्घ्य, इन लेंथ 50 फीट and in wide 20 feet, 50 feet and 20 feet, and in meter we can tell 15 meter and 6 meter. And this is public garnery where the productions were going to store in case of emergency or to engage in trade and commerce. And there are 6 houses in parallel line, 6 houses, this side 6 houses and this side 6 houses, both are in parallel line, and these houses were taking the capacity of as much as production, and the people, they were using this production in the public garnery. They were taking all the things, so that was the most demanded. And पिला माने सबुठु बड़ जिनस हैला ए पब्लिक गार्नरी ऊपर तमर शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़िबो, एवं शॉर्ट क्वेश्चन पढ़िले तमे याको लिखि पारिबो। तेणु ए 2 मार्क रे पढ़ि पारिबो, 3 मार्क रे पढ़ि पारिबो कोन शस्य भंडार। तेणु आर दैर्घ्य होचे 50 फुट, मीटर रे 15 मीटर, प्रस्थ हैला 20 फुट, मीटर रे 6 मीटर, एवं 6-6टा घर को लेकिन गोटे भंडार घर तैयारी करा जाइतिला। ए जो भंडार घर, ए भंडार घर गुडी को संपूर्ण भाव में ए प्रोडक्शन गुडी को संरक्षित होइकी रहितिला। एंड दिस पब्लिक गार्नरी वाज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर all purposes. All the people are taking their right to use these things. So एथुरु हम जानिबा the people of Harappan age, they were jointly living together and they had the right to use the public things. So this is about agricultural things, and I have already told you the food habits and what type of food they were taking and how they were taking their food, from which source, whatever they were taking as food, their own production. And next is, that is their cloth. And very briefly I told you about their cloth while I was discussing about the basic necessary or the basic element of the Harappan people. I have already told you the cloths. मु पोशाक पत्र कथा तुमको प्रीवियस क्लास रे अल्प टिके कहितली, कारण बेसिक नीड्स
हरपान लोक मानकर कौन थिला खाद्य बासगृह पोशाक एवं बर्तमान कहूचे एलाबोरेटली द पीपल दे वर नॉट नेकेड पीपल दो दे वर प्रिमिटिव पीपल दे न्यू हाउ टू कवर देयर ओन बॉडी ताको बॉडी को किपरि कवर करिवे दे न्यू इट जो लोक माने विशाल राजप्रासाद तैयारी करि पारुतिले एते सुंदर रास्ता तैयारी करि पारुतिले से लोक माने निजको ढांकी पार नथंते ना से नॉलेज नहीं दे हाड द नॉलेज बहु उच्च कोटिर नॉलेज तांकर थिला दे ग्रीव कॉटन्स से माने कॉटन बा तुला से माने फसल करुतिले चाष करुतिले जोटा कि आम वर्तमान महाराष्ट्र रोचे कॉटन महाराष्ट्र इज द बेस्ट क्लाइमेट फॉर कॉटन ग्रोइंग कारण आम जानी तुम जोग्राफी पढ़ी फॉर कॉटन ब्लैक सॉइल इज क्वाइट रिक्वायर्ड एंड दे डिस्कवर्ड द ब्लैक सॉइल एंड देयर दे प्लांटेड द कॉटन एवं तुला चाष करी तुला को सिस्टमाइज्ड करी से माने सेतिरु पोशाक तैयारी करथले जोटा कि आज हमको ये जिनस जानिबा पाई हमको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़िया दरकार फैब्रिकेशन दर टेक्सटाइल आम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़िले जाई कि जानि परिबा जे कॉटन केमिति तैयारी करा जीव कॉटन जीन्स हाँ केमिति हार्गिव्स केमिति मेसिन तैयारी कले कॉटन केमिति थ्रेड हबो सूता केमिति मेसिन ने बुना जीव लुगा तैयारी करा जीव आज आम ये सब जिन पढ़ी कि आम जानिले तेणु मु तुमको बारंबार कहूचे विदाउट एनी नॉलेज विदाउट एनी स्किल दे डिस्कवर एवरीथिंग एंड दे स्प्रेड ऑल दिस थिंग टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आज आम पाठ पढ़ीचे किंतु नुआ जिनस सृष्टि करि पारुने किंतु से माने पाठ पढ़ी नांती संसार सबुठ बड़ बड़ जिनस से माने सृष्टि करिसेंती आमे ताकू रिन्यूअल करूचे आमे ताकू काम रे लगाउचे डिफाइन करूचे रिफाइन करूचे किंतु नुआ किछि बाहर करि पारुने से माने अलंकार युक्त मध्य थिले आज जेमती आज आमे भी अलंकार शौकीन होउचे वी हैव ए स्पेशल इमोशन फॉर द ऑर्नामेंट्स especially for the females. Nowadays, the people are interested to be decorated in golden articles, golden ornaments. Likewise, they were also decorated themselves in golden ornaments. And it gote kotha koibi सबुठ बड़ कथा हला हरपन कल्चर रे रिच आउ पुअर लोक भी थिले धनी लोक थिले गरीब लोक भी थिले एवं ये जो धनी गरीब लोक से मानकर लाइफस्टाइल जदिओ भिन्न नथिला बट द सिस्टम ऑफ लाइफस्टाइल वाज समथिंग डिफरेंट वी मस्ट हैव टू एडमिट इट व्हाइल यूजिंग द ऑर्नामेंट दे वेयर using gold, silver, copper and precious stones. The gold, silver, copper, etc. In these precious metals were used in making the ornament. पिला माने जो माने अत्यंत धनिक संप्रदायर थिले से माने सुना रूपा तंबा ये गुड़ी को व्यवहार करुथिले बिकॉज दे आर वेरी रिच पीपल दे कैन अफोर्ड इट बट दोज वेर पुअर जो माने गरीब लोक थिले दे हैड आल्सो कीन इंटरेस्ट टू यूज द ऑर्नामेंट बट दे डिडंट हैव कैपेसिटी they are not economically such balanced to make the ornament in gold, silver and copper, but they had keen interest to wear ornament. They were making ornament from bones, हाडरू तैयारी करुथिले काठर तैयारी करुथिले
एवं माटीर भी तैयारी करथिले व्हाट एवर इट मे बी दे वेर यूजिंग द ऑर्नामेंट जाओ से माने ऑर्नामेंट व्यवहार करिवे दे हैड द कीन इंटरेस्ट से मानकर इंटरेस्ट थिला इच्छा थिला एवं से ऑर्नामेंट द्वारा से माने निजको सजौथिले उभय पुरुष एवं नारी दे वेर यूजिंग द ऑर्नामेंट्स वेर कॉमन ऑर्नामेंट्स वेर नेकलेस बा हार इयरिंग्स बा कानरे लगेबा एवं रिंग्स मुदी ता सहित से माने मध्य चाहूतिले हाउ टू लुक सो ब्यूटीफुल तेणु गछर विभिन्न पत्र को लेकिन गोटे प्रलेप तैयारी करथिले एवं निज शरीर जत्न नौथिले से प्रलेप द्वारा एंड दे वेर मेकिंग द हेयर स्टाइल केश को से माने सजौथिले तेणु ये विभिन्न प्रकार स्टाइलिश लाइफ रे मध्य दे वेर लीडिंग इन दैट एज से माने सेमानकर एज बा सेमानकर जुगरे जो प्रकार चलनी थिला से माने ताकू ही व्यवहार करके चलुथिले जेमती आज आम पाखे विभिन्न प्रकार जिनस अच्छे आम विभिन्न प्रकार जिनस को लेकिन आम 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 जीवन चलाऊे सेमती ऑर्नामेंट परे आम देखा मु प्रथम तुमको कही दे आर वेरी लेबोरियस दे नेवर किल देयर टाइम्स से माने समय को केबे नष्ट करू नथिले एवं समय को नष्ट न करिया पाई से माने परिश्रम करुथिले एवं हाउ टू गेट सम रिलैक्सेशन फ्रॉम देयर डेली हार्ड वर्क प्रत्येक दिन कठिन परिश्रम परे हाउ दे विल बी रिलैक्स्ड दे वेर ऑल्सो मेकिंग एंटरटेनमेंट आमे जेमती आज काम सरीगला परे वी आर गोइंग टू पार्क मॉल सिनेमा थिएटर्स एवरीथिंग टू मेक आवर सेल्फ मेरी टू मेक आवर सेल्फ फिट likewise they were also engaged in variety of entertainment and social functions एवं सोशल फंक्शन करिवे मु तुम कहली जो सातटा चुली बाहरी से खाइबे नाच गीत करिवे एवं नाच से माने भी जଣା थिला दे न्यू हाउ द डांस कारण भूखनन परे डांसिंग गार्ल माटी रो कंढे मिली दे न्यू द डांसिंग से माने नाच भी जानती नोबडी टोल्ड देम ताऊ के सिखी ना whatever they feel they utilize in their dance and that is a dance so this type of pattern they were leading their life and they while they were entertaining themselves se man nijoku tole entertain karuthile what type of entertainment cock fighting kukuda ladai ganja ladai bull fighting sonda ladai swimming like this they were not violent से माने निष्ठुर भाव में कौन सी जिनस एंजॉय करू नथिले किंतु मेडिएवल रे आमे देखिले जे राजा माने निष्ठुरता को बेस करके एंजॉय होउथिले हाथी हाथी सहित लड़ाई करिवा घोड़ा सहित लड़ाई करिवा बाघ सहित लड़ाई करिवा मनीष मल्ल युद्ध करिवा ये जो कठिन जिनस राजा महाराजा माने आनंद पाउथिले बट दिस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट वाज नॉट परफॉर्म ड्यूरिंग द हरप्पन एज बिकॉज दे आर वेरी पीस लविंग पर्सन्स दे वर इंटरेस्टेड टू एंटरटेन देमसेल्व्स नॉट टू किल अदर्स नॉट टू गिव पेन अदर्स कहा को कष्ट देके दे नेवर वांटेड टू बी रिलैक्स्ड एंड दिस इज देयर सेंटिमेंट से मानकर यही प्रकार सेंटिमेंट थिला तेणु मु कहबी दे आर 1000 टाइम बेटर देन आवर कल्चर बिकॉज वी पीपल दो वी आर एजुकेटेड एनफ एंड आम जानिचे एजुकेशन मेक्स ए मैन परफेक्ट शिक्षा मनुष्य को
জাগ্রত করায়, সম্পূর্ণতা করায়। They were not educated. They are always uneducated, but they are perfect. But we are educated, but we are not perfect. Because our sentiment is not always good. Our initiation is not always good. We do not know how to unite ourselves. আমি জানি না। We are all self-oriented. নিজকে আমি দেখো। But the people of Harappa, they never look to themselves only. They knew how to make our life precious. So the latter world will know what we are. So entertainment is a medium to look happy.